Assalamu alaikum. Good morning. How are you, my little champs? Hope you all are in good health. Dear students, today I will give you introduction of letter V, and we will write letter V in school notebook. Students, till now we have learned letters from A to U. Letters from A to U. So first we will revise these letters. So come on, speak with me. Capital A. A for apple. Capital B. B for ball. Capital C. C for cat. Capital D. D for dog. Capital E. E for egg. Capital F. F for fish. Capital G. G for grapes. Capital H. H for hat. Capital I. I for ice cream. Capital J. J for jam. Capital K. K for kite. Capital L. L for lamp. Capital M. M for mat. Capital N. N for nest. Capital O. O for owl. Capital P. P for plate. Capital Q. Q for quill. Capital R. R for rabbit. Capital S. S for sun. Capital T. T for top. Capital U. U for umbrella. Students, after U, which letter comes? After U. After U, capital V. After U, V. See students, this is capital V. V for violin. V for violin. V for violin. Capital V. V for vase. V for vase. V for violin. V for violin. V for vase. V for violin. Students, now we will read names of pictures. Starts with letter V from English textbook. Take out English textbook. Enjoy and learn part 1. Open page number 36. Page number 36. लिसन एंड रिपीट. बच्चों, मैं जो बोलूँ वो सुनना है और फिर मेरे बाद आप सबको रिपीट करना है. सी स्टूडेंट्स, कॉमन से कैपिटल वी. कैपिटल वी. वी फॉर वायलिन. वी फॉर वायलिन. वी फॉर वायलिन. वी फॉर वैन. वी फॉर वैन. V for van. V for vase. V for vase. V for vase. V for vegetables. V for vegetables. V for vulture. V for vulture. V for vulture.
Once again, come on, speak students. Capital V. बोलो चलो, capital V. V for violin. V for van. V for vase. V for vegetables. V for vulture. Students, now we will do this activity. Match V with the correct picture and trace V with a crayon. V को करेक्ट पिक्चर के साथ मैच करना है और फिर V में क्रेयॉन से ट्रेस करना है, पर हम सिर्फ V को करेक्ट पिक्चर के साथ मैच करेंगे. So come on, look here. Which letter is this? Capital V. Capital V. Now see this picture. What is this? Vulture. Vulture starts with letter V. V for vulture. V for vulture. V for vulture. Now see this picture. What is this? Tiger. Tiger. Tiger starts with letter T. T for tiger. T for tiger. So where we will match? V for vulture के साथ मैच करेंगे कि T for tiger के साथ मैच करेंगे? See students, vulture starts with letter V, so we have to match letter V with vulture. Come on, match V with vulture. You have to match capital V with vulture. V for vulture. Students, now I will show you how to write capital V in 4 lines. See students, you have to write capital V from red line to second blue line. I have drawn here 4 lines. You have to write capital V in these 3 lines. You have to write capital V from red line to second blue line. रेड लाइन से सेकेंड ब्लू लाइन तक कैपिटल V लिखना है. सी हाउ टू राइट कैपिटल V. स्टूडेंट्स, फ्रॉम रेड लाइन टू सेकेंड ब्लू लाइन यू हैव टू मेक स्लांटिंग लाइन. रेड लाइन से सेकेंड ब्लू लाइन तक स्लांटिंग लाइन करना है. स्लांटिंग लाइन. Then from second blue line to red line, again you have to make slanting line. You have to go up. Slanting line. First you have to make slanting line from red line to second blue line. Then from second blue line to red line you have to make slanting line. देखो बच्चों, V में पहले रेड लाइन से सेकेंड ब्लू लाइन तक स्लांटिंग लाइन करना है, फिर सेकेंड ब्लू लाइन से रेड लाइन तक स्लांटिंग लाइन करना है. यहाँ पे नीचे से ऊपर जाना है. कैपिटल V. व्हाट यू हैव टू डू, क्या करना है बच्चों? पहले रेड लाइन से सेकेंड ब्लू लाइन तक स्लांटिंग लाइन करना है, फिर सेकेंड ब्लू लाइन से रेड लाइन तक स्लांटिंग लाइन करना है. कैपिटल V. पहले ऊपर से नीचे स्लांटिंग लाइन बनाना है और फिर नीचे से ऊपर स्लांटिंग लाइन बनाना है. You have to write capital V from red line to second blue line. Capital V. Students, now we will write letter V in school notebook. Take out English notebook. My skill book alphabet capital. Open page number 61. Page number 61. Capital V. V for vase. First you have to make slanting line. Then from here again you have to make slanting line. You have to go up. V for vase. V for vase. Students, first we will trace this letter V. Then we will write without tracing. You have to trace this letter V properly. अच्छे से ये letter V को trace करना है. Capital V. Capital V. You have to speak and write. V for vulture.
V for vase, V for vegetables, capital V. Capital V. From red line to second blue line you have to write capital V. See here we have done tracing. Now we will write without tracing. From red line to second blue line first you have to make slanting line. Then from second blue line to red line you have to make slanting line. पहले रेड लाइन से सेकेंड ब्लू लाइन तक स्लैंटिंग लाइन करना है, फिर सेकेंड ब्लू लाइन से रेड लाइन तक स्लैंटिंग लाइन करना है. यहाँ पे ऊपर जाना है. कैपिटल वी, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, कैपिटल वी. You have to write capital V from red line to second blue line. ये रेड लाइन से सेकेंड ब्लू लाइन तक ऐसे कैपिटल V लिखना है. पहले रेड लाइन से सेकेंड ब्लू लाइन तक स्लैंटिंग लाइन करना है, फिर सेकेंड ब्लू लाइन से रेड लाइन तक स्लैंटिंग लाइन करना है. कैपिटल V बच्चों बोल बोल के लिखना है. V फॉर वल्चर, V फॉर वास, V फॉर वेजिटेबल्स, कैपिटल V. V for van, capital V, capital V. V for vulture, V for vase, V for vegetables, V for violin, capital V. V for van. See students, like this you have to write capital V on page number 61. Now we will write on page number 62. First we will trace this letter V. पहले हम ये letter V को trace करेंगे. Capital V, capital V. From red line to second blue line you have to write capital V. You have to make slanting line. From red line to second blue line first you have to make slanting line. Then from second blue line to red line you have to make slanting line. Here you have to go up. पहले ऊपर से नीचे slanting line करेंगे, फिर नीचे से ऊपर slanting line करेंगे. Capital V. V for van, V for vegetables, V for vase, V for vulture, V for violin, capital V, capital V. V for vase, V for van. See students, like this you have to write capital V on both the pages, on page number 61 and on page number 62. You have to write full page with neat and clean handwriting. Speak and write. बच्चों बोल बोल के लिखना है. V for vase, V for vulture, V for violin, V for vegetables, V for van. Capital V. फुल पेज लिखना है और अच्छे राइटिंग से लिखना है. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. अल्लाह हाफिज़.